Hi guys, welcome back to the channel. Today the topic of the video is to talk regarding grand test or mock test. In this video, I'll tell you how you can effectively use your grand test for your Fmge preparation. So yeah, if you guys don't know me, hi, I'm Keshav from Dr. Behind the Scenes. I cleared my Fmge January 2023 exam with a score of 206. So let's start with the first thing. What is grand test? So grand test is basically a replica of a real exam. Real exam has two parts. First part start from 9 to 11:30. Second part start from 1:30 to 4. So two parts with a break in between. Same goes with grand test. It has two papers. 150 question each, 2.5 hour duration. One thing that is very important, I just want to mention is don't wait for all 19 subject to finish before starting grand test, because अगर तुम वो wait करते रह जाओगे वो टाइम कभी नहीं आएगा कि तुम 19 सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस हो जाओ, ऑल 19 सब्जेक्ट्स में. एंड जब तक वो तुम सोचोगे आएगा वो टाइम, तब तक वो लेट हो चुका होगा एंड देन तुम ग्रैंड टेस्ट के लिए लेट हो चुके होगे. सो यू हैव टू गिव ग्रैंड टेस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. ओके, जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तुम्हारे ग्रैंड टेस्ट भी उसी टाइम स्टार्ट होंगे. इनिशियली एम विल बी डिफरेंट, लेटर इट विल बी डिफरेंट, आई विल डिस्कस इट लेटर, बट यू हैव टू गिव इट्स ग्रैंड टेस्ट जब तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो तब से. Now if I take an example of any grand test like now if I take an example of grand test like prep-ladder grand test, so if you can see prep-ladder grand test 300 minutes, 300 questions, 300 marks. So it does not have two parts. So what you can do is go for 150 questions and then take a break of 1.5 hour and then go for another 150 question. So basically the same way you are stimulating कि जैसे real test exam होता है. अगर तुम इसमें ब्रेक लोगे तो ये तुम पॉज कर सकते हो, टाइम आगे नहीं बढ़ेगा, you can pause that. So go with 150 question, take a break, then go with other 150 question. So yeah, in this way you have to take your grand test. You have to stimulate the same atmosphere, like start in morning, start at 9, then go 9 to 11:30, then take a break, then go with another part. Same तुम्हें करना है, because वहाँ तुम्हें बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बैठ सको, क्योंकि your exam starts at 9, so you have to wake up at 7 or 6:30. So 6:30 to 4 ये जो इंटरवल है, इस टाइम पे तुम्हें फुल एक्टिव रहना है. सो तुम ऐसे नहीं हो सकता. यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी कि वो उस टाइम तक एक्टिव रहे. फॉर दैट गिव ग्रैंड टेस्ट एंड स्टिमुलेट द सेम एटमॉस्फेयर जो रियल एग्जाम में होता है. व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द ग्रैंड टेस्ट और व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, इनिशियली गिव ट्वाइस अ मंथ, later go with once a week. So basically when you are in your prepared first reading phase, go with twice a month. When you are in your revision phase, go once a week. Make a proper schedule, like every Sunday or any day. You can choose whatever you want. Just take a particular day, like Sunday every week. तो Sunday पे तुमने exam लिया, then next Sunday exam होगा, तो in a month you will give 4 exams. Okay, start at 9 like I mentioned, take a 1 or 1.5 hour break, give part 2. And if I show you this, again taking an example of prep-ladder. So April में they uploaded 2 grand tests, prep test 6, prep test 7. Same goes with every month, 2 grand tests per month they upload. So अगर you already have 2 grand tests यहाँ पे, if you need more then you have other resources also. Then I'll mention that in another video. But अभी के लिए 2 grand tests हमारे तो यहाँ आ ही रहे हैं. Then for other, I'll mention other resources. Okay, so now coming to the things that you will learn from giving grand tests. First is time management. Most important thing you have to learn is time management, because you have to train your brain to sit from 9 to 4. So for this you have to train. For that you have GTs. Give GTs as much as you can, and later, because in exam your only focus should be to solve that question. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 150 questions है, 150 minutes है and you only did 120 question and 30 questions were left. क्या पता वो 30 questions easy questions हो and you missed out on that. So वो easy points, तुम्हारे easy marks वो चले गए. वो नहीं होना चाहिए. The only aim in your exam, in your 150 minutes should be कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, कितना दिमाग तुम लगा सकते हो. टाइम तुम्हारा मैनेज करना, you have to learn it beforehand, ताकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना हो. Cool. Second is you have to analyze your questions. 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन एनालाइज करना. यू कैन गिव इट अ डे और तुम इवनिंग में वो एनालाइज कर सकते हो. और यू कैन एनालाइज लाइक 50 क्वेश्चंस पर डे. लाइक मंडे यू डिड 50, ट्यूसडे 50 एंड ऐसे 6 डेज में तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा. देन तुम्हारा नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट आ जाएगा. Okay, and analyzing questions में the important question you have to analyze is your wrong questions than right questions. In wrong question, whatever question you did wrong, you have to see 3 things. First, whether that topic or that subject is weak, जो तुमने क्वेश्चन गलत किया है. Second, you did a silly mistake, and third, वो तुम्हें याद ही नहीं था. Okay, या तुम्हें याद था, तुमने पढ़ रखा था, but you forget the time of the exam. Okay, so you have to see these 3 things. If it's a weak topic or weak subject, you have to give more time into the next revision, or whenever you are planning to revise, you have to give more time. If you did a silly mistake, you have to see why you did that and what was your thought when you were marking that answer, or you did not read the proper question, you did not read the except that was written in the end. क्या problem थी, you have to see that, and वो next time पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. And third one is forgettable.
लाइक वो क्वेश्चन तुमने पढ़ रखा था, यू ऑलरेडी स्टडी दैट टॉपिक, बट ड्यूरिंग योर एग्जाम, ड्यूरिंग गिविंग योर जीटीज वो टॉपिक तुम्हें याद नहीं आया. ये जीटीज में ही प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. नाउ यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स जो तुम बार बार भूल रहे हो. मेक अ लिस्ट, पेस्ट इट ऑन योर वॉल, जो भी उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है, और यू जस्ट मेक अ स्टिकी नोट एंड कहीं पे भी तुमसे पेस्ट कर दो. एंड यू हैव टू रिवाइज इट फ्रीक्वेंटली बिकॉज तुम उस टॉपिक को भूल रहे हो. सो यू हैव टू गिव मोर टाइम, यू हैव टू गिव मोर रिविजन्स टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Now, another thing is when you are reviewing these wrong questions, you have to read the explanation, you have to read the full explanation, you have to read कि why those three were not the answers, कि वो एक ही क्यों आंसर था and वो तीन कैसे exclude हुए. You have to see that. If it's a good explanation, bookmark it and revise it in future. Okay, and then you have to analyze your right questions. Right question, it can be two things. First, you already know the topic and you marked it correct. Good, well and good. उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो. Second, you guessed the answer and it got correct. वो तुम्हें देखना है कि ये तुमने जो गेस किया ये करेक्ट निकला. व्हाट वाज द थॉट, उस टाइम पे तुम क्या सोच रहे थे, और वो क्या एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ है. अगर वो सेम चीज़ है, इट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. तुम्हें उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम सही चल रहे हो. तुम्हारा दिमाग सीख चुका है हाउ टू एक्सक्लूड आंसर, तुम्हारा दिमाग सीख चुका है उस टॉपिक में, वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है. नाउ कमिंग टू अनदर थिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो जीटीज जितने भी बनते हैं, जीटीज बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं, उनके ही बेसिस पे बनाए जाते हैं, वो रैंडम टॉपिक्स पे नहीं होते. सो यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन, बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन रॉन्ग, यू गेट टू नो कि ये टॉपिक तुम्हारा वीक है. सो यू हैव टू फोकस मोर टाइम बिकॉज वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. जो ग्रैंड टेस्ट है इज मेड बाय टीचर्स, मेड बाय ग्रेट फैकल्टीज, सो दे नो व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड दे मेड दोज ग्रैंड टेस्ट बेस्ड ऑन दो पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो यू विल जस्ट मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बना लो पर्टिकुलर टॉपिक्स की जो जो इंपॉर्टेंट है एंड जो तुम्हें नहीं आते. एंड देन इन फ्यूचर रिविजन यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट इज स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर सॉल्विंग अ क्यू बैंक, ओके, और तुम PYQ किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कर रहे हो, सो योर ब्रेन इज अडेप्टेड कि तुम कार्डियोलॉजी कर रहे हो एंड कार्डियोलॉजी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, करेक्ट. But in exam, it doesn't happen. Exam में first question can be of anatomy, second question can be of obs gyne, third question can be of pharma. Okay, so you have to train your brain कि वो switch करे subjects को in seconds. So for that, the only thing you can give is your GTs. By giving GTs, you can train your brain कि वो switch कैसे करता है subject को, because GTs same वैसे बने हुए हैं. First question can be of another subject, second question can be of anatomy, second question can be of forensic or PSM. So वो तुम switch करना तुम सीख जाओगे तो वो exam में वो तुम्हें problem ना हो. Okay, this is most important, so you have to train your brain for that. Now, another thing you have to see is while giving GTs, like during your preparatory phase, जब तुम first read पे होगे, obviously तुम्हारे scores उतने high नहीं आएंगे, but later जब तुम्हारे revision phase पे होगे, you have to see कि तुम्हारे अब scores increase होना start हो जाने चाहिए. Because if your scores are not increasing, it means either you are not reviewing it properly or you are not giving it properly. तुम full mindset से या तो नहीं दे रहे हो कि उसे exam समझ के दो, और second, you are not reviewing it properly, so तुम्हें पता नहीं लग रहा what topics you are weak in, what subjects you are weak in, and how much extra time you have to give to that particular subject. Okay, so I'll show my score. ये जैसे prep ladder के ही grand test थे. So in prep test 2, I gave it in July. If you can see 17 July, I scored 142 out of 300. 150 is the passing marks. I scored 142. Okay, but जब मैंने same FMG का अगला एक और टेस्ट दिया था, that is in November. During my revision phase, I got 205 and real exam में I got 206. So here you can see I started with 142. इससे भी लो पे स्टार्ट किया था, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, and then I went to 205. So you have to see if your score are increasing or not, and you have to, if it's not increasing, you have to see what is the problem behind that. I'll make a particular video how you can review your GTs properly. But in this video, I will give a glimpse कि तुम कैसे कर सकते हो. You can take an idea, but for the particular full description, I'll make in another video. So you have to see if your score are increasing or not. Next thing is, like I mentioned, initially aim for giving GTs are different, later it will be different. So initially, during your reading phase, the aim should be your time management, कि तुम time manage कर पा रहे हो नहीं. तुम्हारा brain active है from 9 to 4 और during the whole grand test. ऐसा ना हो कि first part you are active and the last के जब 100 क्वेश्चन है तो तुमने just mark कर दिया कि वो खत्म हो जाए grand test. ऐसा नहीं करना है तुम्हें. ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो तो प्रॉपर फोकसली दो, वरना मत दो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर लो उससे बढ़िया. ठीक है, अगर दे रहे हो और देना है और दे रहे हो तो उसे प्रॉपरली दो. एंड ट्राई करो कि जो 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन, योर ब्रेन इज एक्टिव, सो यू हैव टू ट्रेन दैट ऑल्सो. ओके, एंड ड्यूरिंग योर रिविजन फेज योर एम इज योर स्कोर्स. लाइक आई मेंशन हियर, योर स्कोर्स you have to see. Now coming how you can review your grand test, I'll just give you a glimpse of this. In later video, I'll explain properly. So whatever platform you're using, I'm again taking an exam screenshot of this prep ladder grand test. So just open subject-wise analysis. In subject-wise analysis, you have to see in which subjects you are strong and in which subjects you are weak. Okay, अब तुमने ये देख लिया. Then you have to make a list of last 5 subjects जिसमें तुम weak हो. ये 5 सब्जेक्ट की तुम्हें एक लिस्ट बनानी है जिसमें तुम वीक हो. एंड देन इन नेक्स्ट रिविजन, और जब भी तुम्हारा एक रिविजन प्लान होगा,
In next revision, your first priority will be these 5 subjects. तुम्हें strong पे focus नहीं करना है, जो strong है well and good उसे side रखो, जो weak है उस पे तुम्हें focus करना है. So in next revision you have to schedule ये वाले subjects ये priority में, and in this you have to see what topics you are weak in. Like when you will see the questions of psychiatry, तो 5 question है, let's say 5 question है, 4 incorrect है, 1 correct है, okay I am strong in this topic. जो 4 वीक हैं, यू हैव टू अगेन मेक अ लिस्ट, एंड लिस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 3-4 भी लिस्ट बनाते रहो, कहीं फोन पे लिख लो, व्हाट्सएप पे लिख लो, नोट्स पे लिख लो, जिस पे भी लिखना है, जस्ट मेक अ प्रॉपर लिस्ट की ये टॉपिक्स यू आर वीक इन, एंड नेक्स्ट रिविजन यू हैव टू फोकस मोर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. अब मैं वीक पे भी फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, देन स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यू हैव टू नो व्हाट आर योर वीक सब्जेक्ट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट आर योर वीक सब्जेक्ट्स, तो तुम जीटीज देते रहोगे एंड तुम नॉर्मली अपना रिवाइज करते रहोगे, तो उससे कुछ होगा नहीं. बिकॉज यू हैव टू सी कि तुम जो जीटीज दे रहे हो उसका कुछ फायदा हो रहा है, जो तुम रिवाइज कर रहे हो उससे तुम कुछ फायदा हो रहा है तुम्हारा. So you have to know your weak subjects. So by reviewing, you will get to know. Then you have to give more time, do more revisions, and give priority in your next revision, like I mentioned it before. अगर कोई subject already strong है, तुम इसमें तुम्हें 80% आता है, तुम इसमें और focus करके और time देके उसे 90% बना दोगे. Correct? 80 तुम 90% ले गए. Max कितना? 10% का भी benefit नहीं हुआ. Okay, 80 को 90 तो 100 करना is very difficult. 80 को तुमने 90 कर दिया. Correct? But if any subject you are weak in, वो तुम्हें 10% ही आता है, and तुम उसे revise करके और multiple revisions देके और उसके क्यू बैंक सॉल्व करके उसके स्टिकी नोट्स को बार बार रिवाइज करके यू कैन इंक्रीज इट टू 60%. तो अगर तुम यहाँ देखो तो डायरेक्ट 50% का ग्रोथ है, 10 to 60 डायरेक्टली तुमने एक ग्रोथ करा. दिस इज इंपॉर्टेंट. स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को फोकस करने, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा, बट वीक सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करने का बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें तुम्हें प्रॉपर गेन दिखेगा. एंड दैट्स द होल लाइफ का ही चीज़. हम चीज़ें ही वही करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट मिलता है. करेक्ट? हम पैसे भी, बिजनेस भी वही करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है. प्रॉफिट नहीं मिला तो उस बिजनेस का भी कोई फायदा नहीं है. तो अगर तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो इस जीटी देने का क्या फायदा है. तो तुम जीटी देके यू विल गेट टू नो व्हाट आर द वीक सब्जेक्ट्स, देन यू हैव टू फोकस मोर इन नेक्स्ट रिविजन, एंड उसे तुम्हें उस वीक को इंटरमीडिएट या स्ट्रॉन्ग तक तुम्हें ले जाना है. अगर तुम वहाँ ले गए तो स्ट्रॉन्ग है, वीक को भी तुमने स्ट्रॉन्ग कर दिया. सो नाउ यू आर फुल सेट फॉर योर एग्जाम. So this is your whole, this is how you can use your GTs properly. So yeah, that's all for this video. Thank you so much guys for joining. I hope you guys like this video. I hope you guys find this helpful. And अगर video अच्छी लगी हो तो just like, or you can comment below if you have any questions or if you have any doubts, and do subscribe to our channel for further videos. So yeah, that's all. See you guys in the next video, and all the best to you guys for the. See you. Bye.